बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या कहता है कि इसकी थोड़ी सी definition सुन ले कि a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion in straight line with uniform velocity unless it is compelled to change the state of rest or motion, right? तो इसमें बेसिकली क्या है, फर्स्ट ला हमें इन कंक्लूजन ये कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन देयर इज नो फोर्स, when no force act upon object, what happen? A body will move with uniform velocity, constant velocity के साथ मूव करेगा। या रेस्ट में रहेगा तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। फर्स्ट ला हमें क्या बताता है? फर्स्ट ला हमें यह बताता है कि व्हाट हैपन टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो फोर्स एक्ट अपॉन इट। what happened to an object when no force act upon it? तो जब F जीरो होगा, A जीरो होगा, और जब A जीरो है तो वो बॉडी आइदर रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। दूसरा ला हमें क्या बताता है कि what happened to an object when the force act upon it? So it will produce the acceleration in the body that is directly proportional to the force, right? और तीसरा ला हमें यह बताता है कि what happened to an object at self when it exert a force on other object। यानी एक बॉडी है वो दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको खुद क्या होता है। पहले ला में हमने क्या कहा कि when there is no force, what happened to the object? Acceleration will be zero, right? ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। दूसरा ला हमें क्या बताता है कि व्हाट हैपन व्हेन द फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट? तो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू फोर्स। थर्ड ला हमें क्या बताता है कि उस बॉडी को खुद क्या होता है जब वो किसी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसको हम एक्शन एंड रिएक्शन ला भी कहते हैं, राइट? तो इसमें जो पहला जो दो क्वेश्चन है वो दूसरे स्लाइड पे आ गए, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे पता है। इस क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज द एस आई बेस यूनिट ऑफ द फोर्स? व्हाट इज द एस आई? व्हाट इज एस आई बेस यूनिट ऑफ फोर्स, राइट? ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और ए का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। In the Newton's first law of motion, which quantity remains constant? Velocity, angular displacement, amplitude, amount of work. So the velocity remain constant in the Newton first law of motion. Law of inertia satisfy the condition of Law of inertia satisfies the condition of equilibrium, condition of variable force, condition of a force in contact, condition of the mass conservation. Law of inertia basically satisfies the condition of equilibrium. Law of inertia is basically the first law. वो क्या कहता है कि when F is equal, the state of the body to resist any change, or the property of the body to resist any change in the state of rest or motion. तो ये बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? फर्स्ट लॉ है, और फर्स्ट लॉ में हम क्या कहते हैं कि व्हेन एफ इज इक्वल टू, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम क्या कहते हैं कि व्हेन द नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज जीरो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Which of the following best describe the inertia? Which of the following best describe the inertia? The force of gravity act upon the object, the resistance of the object to change in the state of rest or motion, the weight of the object, the acceleration of an object due to the applied force. So the resistance of the object is basically the change, the property of the body due to which it
resist any change in the state of rest or motion. When we kick a stone, we get hurt. It happened due to what? It happened due to the inertia, velocity, reaction force, all of them. So it happened because of the reaction force. Two forces M1 and M2, two masses in M1 and M2 are acted upon by a constant force, the ratio of the acceleration to masses. So two forces, F1 is equal to M1A1, F2 is equal to M2A2. Forces are constant. ये है क्वेश्चन नंबर 53. फोर्सेस आर कांस्टेंट. इसका मतलब है कि M1A1 is equal to M2A2, right? So A1 by A2 is equal to M2 by M1. M1 A1 by equal to M2 by M1. M2 by M1. तो M2 by M1 ये वाला. Newton's third law of motion is correlated with what? The law of conservation of energy, law of conservation of momentum, law of conservation of velocity, all of them. So Newton's third law is basically related with the law of conservation of momentum. Action and reaction pair are formed at a single body, pair of body, both single and pair, none of them. So it is basically जब हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं तो ये याद रखें कि action is on one body and the reaction is on another body. बाज औकात स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें जो नेट फोर्स है वो जीरो है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. तो वो उस सूरत में जब दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर हो अपोजिट डायरेक्शन में. लेकिन थर्ड लॉ में क्या है कि एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है, रिएक्शन दूसरे बॉडी के ऊपर होता है. तो इट इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ बॉडीज. A mass accelerates uniformly when the resultant force act on it is acceleration. अब देखिए बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं है. जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा हो तो उस केस में नेट फोर्स जीरो होता है. लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो क्वेश्चन में क्या है कि the net force acting on it is zero, constant but not zero, increase uniformly with respect to time, both A and C, right? So इसमें जो correct answer है वो B है, constant but not zero. When a body moves with a uniform acceleration, it means that the net force acting on it is constant. Newton's second law of motion established the relationship between what? Force and acceleration, force and mass, mass and velocity, acceleration and mass. So Newton second law जिस तरह हम मैंने पहले भी बताया कि Newton second law हमें क्या बताता है? A is directly proportional to the applied force, so it established the relationship between the force and the acceleration. Two blocks of masses 1 kg and 3 kg placed in contact or acted upon by a force of 40 Newton. The acceleration of 1 kg mass will be. Two block of masses placed in contact. अब ये देखे दोनों जो masses है ये contact में है तो हमारे पास total mass कितना हो गया? M1 plus M2. तो M1 कितना है? ये 1 kg है. M2 कितना है? 3 kg है. तो टोटल मास कितना हो गया? 4 kg. तो अब इसमें जो एक्सेलरेशन है A इज इक्वल टू F बाई M. A इज इक्वल टू F बाई M. F हमारे पास कितना है? 40 न्यूटन. और टोटल मास चूंकि दोनों मासेस आपस में कांटेक्ट में है तो दोनों मासेस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो बॉडी जो 1 kg मास है या जो 2 kg मास है दोनों में बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. अगर वो एक्सेलरेशन क्या है? वो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड. और
फिर बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, राइट?